अस्सलाम वालेकुम। सरदार काशिफ सरफराज हेयर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसमें मैंने 244 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारा इस वीडियो का। फॉर एसडीओ, एएसजे, सिविल जजेस, तहसीलदार, एलआरओ, एडीएलआर और दीगर जो लीगल की पोस्ट्स हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पेपर में जो एसडीओ का पेपर आने वाला है यकम और 2 तारीख को, उसमें आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन नज़र आएंगे और आपको सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तर्ज का आपके सामने आ जाता है, आप इजीली इन वीडियोस को देखने के बाद इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 245 पे जाते हैं। इससे पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मज़ीद मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, उसके कुछ एमसीक्यूज़ रहते थे, वो इंशाल्लाह हमारी लास्ट वीडियो होगी। आज कोशिश करूँगा ये भी हमारी लास्ट वीडियो लैंड रेवेन्यू के मुतल्लिक़ हो। क्वेश्चन 245 है, अ विलेज ऑफिसर में बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 113 इफ़ ही डज नॉट क्रेडिट कलेक्टेड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। जो वो मालिया इकट्ठा करता है, अगर वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा नहीं कराता तो उसके खिलाफ कार्रवाई 113 के तहत होगी। रिकवरी अंडर सेक्शन 113 इज़ मेड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो विलेज ऑफिसर और लंबरदार होता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू? फीस, फाइन्स, कॉस्ट एंड विलेज ऑफिसर सेस, ये सारे रिकवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू ड्यू ऑन फिशरीज एंड मिल्स व्हेन नॉट इंक्लूडेड इन असेसमेंट इज़ रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू का क्वेश्चन ज़रूर आना है किसी न किसी तर्ज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीसिस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एम्बैंकमेंट एंड वाटर सप्लाई वर्क्स आर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। वाटर रेट्स और कैनाल मेंटेनेंस चार्जेस आर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लाइबल फॉर सम्स ड्यू एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ़ अ पर्सन एक्ट्स एज श्योरिटी द श्योरिटी। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 114 एफ, गवर्नमेंट में रिकवर एडिशनल सम्स एज इट कंसीडर्स नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्स रिकवरेबल अंडर चैप्टर 9 आर ट्रीटेड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन लाइबल अंडर चैप्टर 9 इज डीम्ड डिफॉल्टर, जो पे नहीं करता unless otherwise declared by law. Section 90 applies to recovery under chapter 9. What does section 90 relate to? Land charge with arrears. Next question है, recovery charges deducted from sums collected as arrears of land other than provincial dues are 2%. Next question है, the commission deducted under section 115A is credited in provincial consolidated fund. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे डायरेक्ट रेवेन्यू सर्वे इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डर कर सकता है सर्वे करने का। रेवेन्यू सर्वे इज कंडक्टेड फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू सर्वे में एक्सटेंड टू इंटायर विलेज टाउन्स और सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन लैंड्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेवेन्यू सर्वे एट डिस्क्रिशन ऑफ ऑफिसर्स कंडक्टिंग द सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेवेन्यू ऑफिसर में डिफाइन द लिमिट्स ऑफ स्टेट्स होल्डिंग्स फील्ड्स ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिफाइनिंग बाउंड्रीज रेवेन्यू ऑफिसर में रिक्वायर बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड और रिपेयर्ड। ज़मीन की पैमाइश करने के लिए बाउंड्री मार्क्स लगाए जाते हैं और उन्हें रिपेयर भी किया जाता है। रिकवरी रेवेन्यू ऑफिसर में रिस्टोर बाउंड्रीज मार्क्स ऑलरेडी सेटअप बाई कोर्ट। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर है। जब भी ऑल ऑफ अबव वाला क्वेश्चन आए तो मोस्टली ऑल ऑफ अबव आंसर होता है। ये भी एक ट्रिक है एमसीक्यू सॉल्व करने का। ड्यूरिंग सर्वे पर्सनस हैविंग राइट्स मस्ट
attend personally or through agent and indicate boundaries. Next question है temporary marks during survey must be of kind described in notice proclamation. Next question है penalty for failing to comply with survey notice is Rs 50 rupees. Next question है landowners are bound to provide flag holders and chainmen. Flag holders and chainmen. Next question है if landowners fail to provide chainmen, cost of hired labor is assessed on land surveyed as area of land revenue. Next question है who may publish a notification for professional survey? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेशनल सर्वे मे बी कंडक्टेड बाय एजेंसीज अदर देन रेवेन्यू एंड विलेज ऑफिसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट must the notification of the board of revenue specify in case of professional survey local areas to be surveyed, nature of survey, officer by whom the survey is to be made, kind of boundaries marks, all of the above इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है from the date of notification the officer conducting the survey enjoy powers of revenue officer under section 30. Next question है who is empowered to make rules for demarcation of boundaries and erection of boundary marks? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. रूल्स अंडर सेक्शन 121 में प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ बाउंड्री मार्क्स, मटेरियल ऑफ बाउंड्री मार्क्स, लोकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर. ये इसके ए और बी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री इज डिटर्मिनेटिव ऑफ proper position of boundary lines, rights of landowners on either side. A and B इसका आंसर है. Whose approval is required for rules allowing eviction of wrongful possession after boundary settlement? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है. Who can evict landowners wrongfully in possession after boundary settlement? कलेक्टर इसे करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है who may order a permanent boundary lines between रिवरियन स्टेट्स? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हु फिक्सेस एंड डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन रिवरियन स्टेट्स आफ्टर बोर्ड्स ऑर्डर? कलेक्टर करता है. व्हाट मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग बाउंड्री बिटवीन रिवरियन स्टेट्स? हिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन ओनिंग राइट्स. ये ए एंड बी इसका आंसर है. हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बिफोर बाउंड्री लाइन बिटवीन रिवरियन स्टेट्स इज डीम्ड परमानेंटली फिक्स्ड? कमिश्नर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस फिक्स्ड अंडर सेक्शन 123 द बाउंड्री लाइन शैल बी परमानेंट एंड कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रिएटरी राइट्स आफ्टर फिक्सेशन ऑफ बाउंड्री शैल वेस्ट इन landowners of the state in which land lies. Next question है who decides whether land is reasonably fit for cultivation or yield substantial value? collector करता है. The decision of collector under section 124 subclause 4 is final. Next question है who may apply for immediate transfer of rights suspended under section 124 subclause 2? landowners concerned. Next question है what is required from landowners applying for immediate transfer of rights, payment of compensation? Who fixes the day for hearing of application under section 125? collector fix करता है. whose guidance must collector follows in awarding compensation? land acquisition act 1894 section 23 और 24 important है. when do rights get transferred after compensation is deposited? on 15th May next after deposit. Where is compensation placed if a person refuses to accept it? government treasury. Next question है voluntary transfers of rights under section 127 cases to be subject to order under section 124 subclause 2 ceases to be subject to order under section 124 subclause 2. Next question है rights transfer under section 124 and 127 shall be subject to all incidents of tenure. Next question है who bears cost of boundary and survey marks
persons interested in land. Next question है government may direct the cost of boundary marks to paid out of village officers cess. Next question है whose duty is it to prevent destruction of boundary marks? village officer की duty है. Next question है if land owners fails to erect boundary marks within 30 days who may cause them to be erected? revenue officer है. Next question है how may collector recover the cost of erection repair of boundary marks area as area of land revenue? Next question है who is responsible for maintenance of boundary marks of his holding? landowner. Next question है who must report destruction removal of boundary marks? village officer करता है report. next question है land measurement or survey shall be based on square system or rectangulation system? minimum size of survey or khasra number under section 133 is 1 acre. next question है fine of our destruction injury removal of boundary marks may extend to 500 rupees. next question fine under section 134 is imposed by revenue officer. imposition of fine under section 134 does not bar prosecution under section 434 ppc. next question है who may refer a dispute to arbitration with the consent of the parties? revenue officer करता है. which revenue officer may refer disputes to arbitration without consent of the party? collector and assistant collector of first grade. next question है which of the following disputes may be referred to arbitration without consent? matters under chapter 6 entries. next question है a collector or assistant collector of first grade may refer to arbitration without consent regarding distribution of assessment under section 67. next question है dispute regarding limits of state or holding may be referred to arbitration without consent by collector or AC first grade. next question है dispute about property to be divided at partition or mode of partition may be referred to arbitration by collector assistant collector first grade without consent. next question है order of reference to arbitration must specify precise matter, number of arbitrators, nomination period, award period. next question है maximum number of arbitrators each party can nominate to. next question है if arbitrators are not nominated or award not delivered in time revenue officer may cancel order of reference. next question है when order of reference is made each party nominates arbitrator and revenue officer nominate one more arbitrator. next question है revenue officer may disallow nomination of arbitrator by a party if he records reasons. next question है if nomination of arbitrator is disallowed party must make another nomination within time specified by revenue officer. next question है order disallowing nomination of arbitrator by revenue officer is final. next question है if an arbitrator nominated by a party dies, refuses or become incapable party may nominate another person. next question है if party fails to nominate arbitrator after disallowance under section 153 revenue officer may nominate. if arbitrator nominated by revenue officer dies or refuses, revenue officer nominate another person. revenue officer issue process for appearance before arbitrators on application of arbitrators. next question है a person appearing before arbitrators under process are bound to state truth and produce documents. next question है award of arbitrator must be in writing under their hands. next question है award of arbitrator must also contain reasons for award. next question है if an arbitrator dissent from award of majority he must state grounds of dissent in award. next question है arbitrator may present award to revenue officer. all of above इसका आंसर है personally through agent by registered post. next question है on receiving award revenue officer shall fix a date for consideration. next question है on date fixed for consideration of award revenue officer shall hear objections of parties. next question है revenue officer may deal with award by accepting, modifying or rejecting. next question है decision of revenue officer on award is appealable as if arbitrator not appointed. ये important है. next question है does arbitrator act 1940 apply to arbitration under chapter 7
सॉरी 7 नहीं 12 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट, नो इट डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हुज ओरिजिनल और एप्लेट ऑर्डर डज एन अपील लाई टू द कलेक्टर। ये असिस्टेंट कलेक्टर आइदर ग्रेड, किसी भी ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, कोई भी हो सकता है। व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय अ कलेक्टर द अपील लाइज टू कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑर्डर इज मेड बाय कमिश्नर अपील लाइज टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्म्ड ऑन फर्स्ट अपील a further appeal shall not lie. Next question है if collector modifies or reverse an order on appeal the order of commissioner or further appeal shall be final. Next question है for appeal purposes an order passed in review modifying or reversing a previous order is deemed original order. Next question है an order shall not be confirmed modified or reversed in appeal unless reasonable notice has been given. Next question है limitation period for appeal to collector under section 161 30 days. very important question है ये next जो आनी है। लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील टू कमिश्नर 60 डेज़ है। लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 90 डेज़। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हु मे रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ और प्रेडिसेसर कमिश्नर कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट एविडेंस either apparent on face of record other sufficient reason all of above इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a commissioner cannot review predecessor's order without sanction of board of revenue. Next question है collector cannot review predecessor's order without sanction of commissioner. Next question है other revenue officer require sanction of immediate superior revenue officer. Next question है time limits for application for review of an order 90 days very important है। next question है application for review beyond limits is allowed if sufficient cause is shown. Next question है before modifying or reversing an order in review the revenue officer must give reasonable notice to parties. Next question है an order against which an appeal has been preferred cannot be reviewed. Next question for purpose of review collector is deemed successor of assistant collector or any lower class revenue officer who has left district. Next question है appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review. Next question है clerical or arithmetical mistake in any decree or order may be corrected at any time by revenue officer. Next question है in section 161 officer includes successor in office of the such officer. Next question है limitation for appeal review or revision under this act is governed by limitation act 1908. important है। next question है if a headman or landowner refuses to receive a sum other than rent or give a receipt the payer may apply to a revenue officer to deposit the sum. next question है when payer is in doubt as to who is entitled to receive the sum other than the rent he may apply to revenue officer for deposit जो उसने rent पे करना है। the revenue officer shall receive the deposit if applicant pays the fees officer is satisfied there is sufficient ground applicant is examined all of above इसका आंसर है। once deposit is received by revenue officer liability of depositor to landowner is discharged. Next question है if deposit is made on account of payment due to government it shall be credited to government. Next question है when deposit is on any other account the revenue officer gives notice to all claimant. Next question है revenue officer may pay amount to entitled person retain pending civil courts decision. ये बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूट्स लाइज अगेंस्ट गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सैंक्शन अंडर सेक्शन 169 इफ डन इन गुड फेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ सिविल criminal courts for attachment sale delivery of land are executed by collector or officer appointed by collector. Next question है attachment of produce does not prevent owner from reapping gathering or storing produce. Next question है if owner fails to preserve attached produce duty lies on attaching officer. Next question है purchase of produce after sale has right to enter
land to preserve, remove produce. Next question है jurisdiction of civil court is excluded in matters covered by revenue officer. Next question है civil courts have no jurisdiction over limits of land defined by revenue officer. Next question है civil courts cannot compel discharge of duty imposed by act on the revenue officer. Next question है claims regarding office of village officer or exclusion from it are excluded from civil court jurisdiction. Next question है framing of record of rights or periodical record falls under revenue officer. Next question objection to amount, rate, period of land revenue assessment by government lies before revenue officer. Next question is sale of for recovery of arrears can be set aside by civil court only on ground of fraud. Next question है board of revenue may invest revenue officers making record of rights generally reassessment with civil courts powers. Next question है order under section 173 may be cancelled wholly or partly by board of revenue. Next question है board of revenue may direct appeal from decree of revenue officer with the civil courts power shall lie to revenue officer with the appellate powers. Next question है if land reserved for common purpose is encroached upon revenue officer may eject encroachers. Next question है revenue officer may be order forbid repetition of encroachment. Next question है penalty for encroachment on village road path or common place may extend to 500 rupees. Important. Next question further fine for continuing encroachment per day 50 rupees. Next question है record prepared kept by village officer are property of government. Next question है village officer is deemed public officer having custody of public document under कानून शहादत order 1984. Next question है maps and lands records are open to public inspection at reasonable hours. Next question है certified extracts from computerized land record shall be given to every person on demand with prescribed fee. Next question है revenue officer or employee shall not purchase or buy bid for property order to be sold by revenue court in his district. Next question है revenue officer is prohibited from engaging in trade in his district in contravention of rules. Next question है revenue officer may become shareholder of companies incorporated under Companies Act. Next question है where this act provides that an order shall be final it means no appeal lies. Next question है even if order is final board of revenue may modify, reverse or set aside under section 164. Next question है according to section 180 lambardars shall not be appointed in areas where law before commencement did not provide for it. Next question है rules for appointment of lambardar are not enforceable in any part of province where earlier law did not provide for such appointment. Next question है legal proceeding cannot be instituted against a revenue officer for act done or ordered in good faith under the act. Next question है protection to revenue officers extend to actions taken under provision of this act or any other law in force. Next question है who may makes rules under this act board of revenue with the prior approval of government. Next question है rules may be made for number and amount of installments. Next question है rules may fix amount of installment, time of installment, places and manner of payment. All of above is answer. Next question है rule may fix dates for profit divisible by headman on behalf of co-sharer. Next question है rules may prescribe fees for execution of processes, mode of collection of fees, number of person employed, duties, remuneration of other persons. ये सारे इसके आंसर है. Next question है rules may regulate procedure for inspection of record of revenue, inspection of village officer paper, obtain copies and searches. All of above इसका आंसर है. Next question है rules may be prescribed from form for all of above books, entries, statistics and accounts. Next question है rules may be framed generally for carrying out purposes of the act. Next question है condition for making rules under the act after previous publication. Next question है enactment in part 1 of the schedule are repealed. Next question है enactment in part 2 of the schedule
stand repealed on commencement if applicable. Next question है if only some provisions of the act apply to an area then only corresponding provision in earlier enactment repealed. Next question, notwithstanding repeal, all rules, appointment, notification powers, lease, records, etc. made under repealed enactment shall continue if not inconsistent with this act. Next question है all assessment of land revenue under repealed enactment continue until fresh assessment under this act. Next question है which act is repealed under part 1 Punjab Riparian Boundaries Act 1899. Next question है which Punjab Land Revenue Amendment Act is repealed 1912, 1928, 1929. All of above इसका आंसर है. Next question, which West Pakistan ordinance are repealed? Ordinance number 29 है 1959 और 45 1959 ordinance 28 1962 ordinance 37 1962. ये तमाम इसके आंसर है. Which Sindh Act provisions are repealed? Sindh Revenue Jurisdiction Act 1876 sections 456, Sindh Village Officers Act 1881, Sindh Land Revenue Code 1879. ये all of above इसका आंसर है इसका. Punjab Land Revenue Act 1887 is repealed in NWFP बलोचिस्तान बहावलपुर नसीराबाद सब डिवीज़न जैकबाबाद. ये हमारे 204 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं 26 मिनट में. इंशाल्लाह ये वीडियो हमारी कंप्लीट होगी. इस तरह मैंने जो MCQs हैं लैंड रेवेन्यू के बिल्कुल कंप्लीट कर दिए. नेक्स्ट मेरी वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे उसके सारे चैप्टर्स के मैं इम्पोर्टेंट सेक्शन के MCQs बना के आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा और आप इसको देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके. और एक हमारा जो है पंजाब इन्फोर्समेंट रूल्स वगैरह का जो एक एक्ट रह गया है वो इसके MCQs बना के मैं शेयर एक दिन के अंदर कर दूंगा. आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.